Hello बच्चों, let's read this question. How does an ionic character arise in a covalent bond? Which parameter is used to measure the degree of polarity in a bond? Give examples of non-polar molecules having polar bonds. So let us discuss about this. इस question का key concept देखते हैं. And the key concept of this question is ionic character, ionic character of covalent bonds. Covalent bonds. So ionic bond वो बॉन्ड होते हैं which are formed by the transfer of electron से बनते हैं, whereas covalent bond वो bonds होते हैं between the atom which are formed by the sharing of electrons. Now let us discuss more about this. जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है HCl का, एंड हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंसी शेल में, एंड इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. जो क्लोरीन है हमारे पास, दैट हैज टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स में, और वी कैन से जो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दैट आर एज 2 8 एंड 7, विच शोज 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में. एंड क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं. देयर इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन, एंड जो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स द number of electrons of chlorine and circle represents the number of electrons in the hydrogen. एंड इस तरीके से यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है एंड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट आफ्टर द फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड ड्यू टू विच जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, एंड इट गॉट सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड ड्यू टू polarity generated it shows the ionic character in the covalent bond. So this was the basic concept behind this, and let us write the same. due to due to difference of electronegativity between difference of electronegativity electronegativity between different atoms forming covalent bonds, polarity is generated and atom or element becomes partial positive or partial negative, partial or partially positive or partially negative, which shows ionic character in
covalent bond. And due to the difference in the electronegativity between the different atoms, dipole moment जनरेट होती है. डायपोल मोमेंट जनरेट होती है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड मैथमेटिकली अगर देखें ये प्रोडक्ट होता है चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड का. एंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होगी और उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा. सो वी कैन से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, difference in electronegativity is directly proportional to the polarity between the atoms. Polarity between the atoms, and further it is directly proportional to the dipole moment. Dipole moment. And by this we can say जो parameter है which measure the degree of polarity in a bond, that is the dipole moment. Dipole moment measure the degree of polarity in a bond. Now we have to give some more examples which are non-polar molecules and उनमें polar bonds present है, which means जो ionic character show करेंगे covalent molecule होते हुए भी. And some of the examples are PCl3, CO2 carbon dioxide, H2O water, etc. So between them, due to the difference in the electronegativity, जो है ionic character है वो generate हो जाता है. And this was the whole explanation for the answer. Hope the solution was understandable. Thank you.